Good afternoon, everyone. I hope I am clearly visible and audible. Hi, good afternoon. Good afternoon. Yes, clearly audible. Thank you for the confirmation. Good noon, everyone. We will share the views, Doshi. We'll focus more around the expiry and then we'll start the session around stocks. Hi, everyone. Hi, good afternoon. Good afternoon. We will be starting the session in a while. Just give me a second. We are waiting for our expert Nikon sir to join in and then take it ahead from here. If you can't hear me, feel free to write something in the chat that we can't hear you. There is an issue with the video, and if it's clear, that is great. Nifty support, we will be sharing the Nifty support soon. Nikon sir is here. Nikon sir, I've sent you an invitation. Please join in. I hope you can hear me, sir. Anuj, am I audible? Yes, sir, you are clearly audible. Just 2 minutes, I'll just share my screen and then can go. Sure. So guys, how many of you are joining for the first time? कितने लोग पहली बार आए हैं? You can just write yes in the comment if this is your first session ever. We have few people who have joined in for the first time. So let me start officially. Good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager here at Motilal Oswal. You see me daily managing these sessions, taking your queries. हमारे जो सेशन होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं. Every day we have a different expert and every day we have 2 sessions. The morning session revolves around cash, equity, stocks, and afternoon session revolves around derivatives, expiry. Since we have FINNifty expiry today, we will be focusing more on the FINNifty. And with me today we have Nikon sir, who will be taking this call forward. We will start with the market update around FINNifty, Nifty, BankNifty, and soon we'll move towards the FINNifty expiry. And if we have some time, we will take up stock queries. So Nikon sir, over to you. Okay. So good afternoon, everyone. Good afternoon, Anuj. I hope everyone is doing fine. And there has been some global sell-off. Last 2-3 दिन में हमने देखा है geopolitical concerns and other economy-related data which were out on Friday evening. जिस वजह से हमने देखा है कि US market में and especially Asian market में, Japanese market में काफी बड़ा sell-off आया, almost 20-25% in last 2-3 days, which has which is why जिसके वजह से हमारे वहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर से correction आया है. But comparatively, we have been doing fine as a market as a whole. And Nifty की अगर बात करें तो Nifty 24,000 फिलहाल 2 दिन से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है. कल भी गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद नीचे में 22,890 के आसपास से सपोर्ट है कि आज वापस 200 पॉइंट की ऊपर स्टार्ट किया था, लेकिन ऊपर से वापस थोड़ा सा और करेक्टिव मूव आया है. बट एज ऑफ नाउ निफ्टी 24,000 होल्ड कर रहा है. नीचे में अगर बात करें लेवल की तो 23,750 इज वेरी क्रूशियल फॉर निफ्टी. फिलहाल के लिए जो कल का गैप डाउन हुआ था वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट का काम करेगा. तो 24,300 24,500 एक इमीडिएट हर्डल बन जाएगा नियर टर्म के लिए. लार्जर टाइम जैसे कि बात करें अगर तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट नियर टर्म थोड़ा सा ऊपर से करेक्टिव मूव आया है. 2 गैप डाउन हुए थे निफ्टी में एंड द गैप हैज नॉट बीन फिल्ड येट. तो एक थोड़ा सा नेगेटिव बायस दिख रहा है निफ्टी में. अपसाइड फिलहाल के लिए कैप्ड है 24,350 एंड 500. ये इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है. नीचे में 23,750 वेरी क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी के लिए. Sir, before moving on, I just want to confirm one thing. Guys, I hope आप निकुंज sir को सुन पा रहे हैं. You can hear निकुंज sir clearly. Please write yes and then we will move on with the session. If you can hear him clearly and there is no issue with the audio. Okay, that's great. Yeah, I think, yeah, exactly. Sir, please move on. Yeah, so Nifty, as I said, 23,750
क्रूशल सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए. ऊपर में 24,300 और 500 हर्डल का काम कर सकता है. बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग काफी टाइम से. निफ्टी ने तो काफी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखा है. बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा ही नहीं, और नीचे में अभी वेरी क्रूशल सपोर्ट पे है 49,500. एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी में. अभी फिलहाल 49,750 800 के आसपास है. तो एक स्विंग लो ट्रेड किया है कल गैप डाउन के साथ, और अभी 49,500 स्पॉट लेवल पे काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए. और ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है 50,200 एंड 50,400. तो बैंक निफ्टी हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग एंड इट हैज बीन सीइंग फॉलो अप सेलिंग, एंड नीचे में 49,500 एक इमीडिएट सपोर्ट है. जिसकी एक्सपायरी है फिन निफ्टी, उस पे आता है. The index has been seeing selling pressure from the opening tick. एक sharp correction देखा, फिर almost 1-2 hours से एक कंसोलिडेशन में गया, और अभी फ्रेश ब्रेकडाउन देखा है हमने. 15 मिनट की चार्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 1:30 बजे के आसपास एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है. तो हमारा बायस नेगेटिव ही है. वीकली वीवैप भी 22,900 है, एंड वी आर ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स लोअर देन द वीकली वीवैप इन फिन निफ्टी. तो हमारा बायस नेगेटिव ही रहेगा. वी आर गोइंग टू प्ले विद सेल ऑन बाउंस स्टांस इन फिन निफ्टी. तो करंटली स्पॉट इज ट्रेडिंग एट 22,550. तो द ऑप्शन दैट इज ऑन आवर रडार इज 22,600 का पुट ऑप्शन फिन निफ्टी का. जो करंट मार्केट प्राइस उसका 60 रुपया है, 58 से 60 है. तो हम एक थोड़ा सा अपमूव सेल ऑन बाउंस स्टांस है, तो थोड़ा सा एक बाउंस आता है तो डेट वी विल लुक इनटू टू सेल इनटू. तो एक छोटा सा बाउंस बैक वेर इन द फिन निफ्टी बाउंसेस बैक टुवर्ड्स 22,580 या 600 के आसपास. तो विल ट्राई टू सेल दैट बाउंस. We are not going to be aggressive with regards to buying the option, but FINNifty 22,600 put फिलहाल 60-62 है. We'll try to buy it near 40 से 45 की range में. We'll keep a small stop loss of 20 to 24, and we'll look for a target of 80 to 85 on the higher side. So as of now, I have shared the levels of all three indices and also the strike that is on our radar. FINNifty का 22,600 का put option फिलहाल it is quoting at 58 to 60, and we'll try to buy on dips till 40 to 45. 40 to 45 की range में we'll try to buy this put option, and keep a stop of 22, and we'll look to for a target of say 80 to 85. तो फिलहाल फोकस इस इन अपने ऑप्शन ट्रेड पे ही करेंगे, cause there has been sharp swings on the both the index and India VIX. एक फैक्टर है जो वोलेटिलिटी का लिए प्ले कर रहा है. तो हमारा ऑप्शन ने लो किया है 47 का. तो आई थिंक वी हैव आस्क्ड टू बाय नियर 40 to 45. तो रेंज में आएगा तो विल एग्जीक्यूट द ट्रेड. एंड इंडिया विक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया विक्स हैज बीन सीन अ शार्प रन अप. ऑलमोस्ट लास्ट 2 दिन में काफी शार्प रन अप देखा गया है. तो आई जस्ट शेयर द चार्ट. फोर्टीन वाला ऑलमोस्ट 22-24 हो गया है. तो a huge spurt in the India VIX. तो which is why there is sharp volatility wherein we opened positive और ऊपर से पूरा selling आ गया है. तो ये swings रहेंगे till the time the VIX does not subside below 14 levels. तो which is why we have asked to buy in a dip. तो dip I think it made a low of 47, so our option is not active, but वहाँ से थोड़ा सा एक recovery move आया है wherein 47 का low करके 63-64 आया, but our trade is not executed because हमारा range था 40 से 45 के बीच में. तो फिर निफ्टी थोड़ा सा एक बाउंस बैक ट्रेड आता है तो we'll definitely our trade will get executed. And the major concern is the geopolitical tension between in the Israel and the other places, and जो US
maybe जो data point है which has been lower than expectation, which is why there has been a global sell-off and we are not spared. हमारा put option track कर रहे हैं, it is at 65, 66. So we'll see. थोड़ा dip आता है तो we'll try to catch the trade in that. So in the meantime, I think we can take few queries. We'll wait. थोड़ा सा bounce back आता है तो we'll try to get the trade in. Till the time I'll keep updating. अगर execute होता है तो I'll definitely come across and update on the same. Sir, your view on SBI? SBI जैसे बैंक निफ्टी है वैसे SBI गैप डाउन, 2 गैप डाउन हुए हैं नीचे में और इमीडिएट सपोर्ट 795 और 785 के आसपास आ रहा है, तो दैट इज सपोर्ट फॉर SBI. ऊपर में फिलहाल के लिए 840 विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट. अगर आपको फ्रेश लेना है तो आई थिंक वेट फॉर 790 के आसपास, देन यू कैन एंटर द ट्रेड इन SBI. जिन लोगों को ट्रेड में कंफ्यूजन है, प्लीज चेक द पिन मैसेज. हमने ऑलरेडी पिन कर दिया है आपके स्क्रीन पे, तो वहां से यू कैन गेट द डिटेल्स अबाउट द ट्रेड्स. सर, योर व्यू ऑन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड? नेशनल फर्टिलाइजर आई थिंक थोड़ा सा साइडवेज है, ऊपर से थोड़ा करेक्टिव मूव आया, लेकिन इट हैज कम नियर द सपोर्ट जोन. 128 126 इमीडिएट सपोर्ट जोन है NFL के, तो आई थिंक दैट शुड बी a good point wherein you can buy if you want to buy. अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन है तो keep a stop of 125 and hold on to your position. Sir, your view on HAL? HAL थोड़ा सा करेक्टिव मूव आया है ऊपर से, ऑलमोस्ट 5400 वाला 4500 आ गया है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट करेक्शन है. लेकिन हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो 4300 and 4000 आर टू इमीडिएट सपोर्ट फॉर HAL. तो एक करेक्टिव मूव आया है, तो आई थिंक दिस शुड बी कैन एंटर फ्रेश ट्रेड नियर 4300 और 44000 odd in HAL. Sir, Tata Power? I think Tata Power has been outperforming. Even today it was doing well. Tata Power has been holding quite well. ऊपर में 460 से वापस 440 आया है, तो I think 420 is a very strong support for Tata Power. So I think you can maintain 420 as a stop and continue to be long Tata Power. ऊपर में 455 465 का टारगेट देख सकते हैं Tata Power में. Rajneesh Wellness? Rajesh Wellness? Rajneesh, RAJNISH. मतलब even I am hearing it for the first time. I'll check on BSE if it has BSE. RAJNISH. Okay. Only BSE listed है. और 4 रुपए का स्टॉक है. I think best avoided. We don't have any view on that. Sir, Dr. Reddy's? Yeah, I just come back to the option. अपना ट्रेड तो बाइंग रेंज के पास और 2 रुपए से बच गया, लेकिन अभी 90 के आसपास है, तो विल ट्राई टू अपना रेंज ऊपर कर देते हैं, वेरिन विल ट्राई टू बाय नियर से 60 to 65 के आसपास अगर आता है तो विल ट्राई टू एग्जीक्यूट द ट्रेड. थोड़ा सा और करेक्टिव मूव आया है, स्लो एंड स्टेडी. द इंडेक्स हैज ड्रिफ्टेड लोअर एंड मेजरली प्राइवेट बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक and SBI from the PSU has put some selling pressure on the index. तो जो 22 या 600 का पुट था, we have to buy between 40 से 45 47 का लो किया, वहां से almost 97 होके आया, तो we'll try to buy near से 58 से 65 के बीच में. We'll keep a stop of 15 points, that is 50, and we look for a high target on say 85 to 90. So we have changed our buying range 58 से 60 के आसपास. We'll try to look
to buy between that range only. We'll keep a very small stop of 10 to 12 points and look to play with a risk reward of 1:2 or 2.5. So अगर 10 point का stop है तो we'll try to capture 25 to 30 points in FINNifty 22,600 put option. Yeah, so what was the stock you said? Dr. Reddy's. Guys, we have a new trade, FINNifty 22,600 put, buying near 60-65, stop loss 50, target 85 to 90. Yes, okay. Sir, please. Yeah. So Dr. Reddy, pharma as a sector is a defensive sector. Pharma and FMCG usually low beta रहता है, तो जब market correct होता है तो they trend to outperform. So Dr. Reddy has been holding strong. ऊपर में 6950 का एक रेजिस्टेंस पॉइंट, अगर 6950 निकल जाता है तो 7150 और 7250 का भी एक अपसाइड टारगेट देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी. इमीडिएट सपोर्ट है 6750 का इन डॉक्टर रेड्डी. So next, CG Power. I think फिर से हमारा ऑप्शन has made a low of 74 and again it came to 95. So let's see. CG Power is फिलहाल 670 है, नीचे में 640 is very strong support. तो I think जब तक 640 नहीं ब्रेक करता है CG Power continue to be long. ऊपर में वापस 720 750 के टारगेट्स आ सकते हैं. So Canara Bank. Kadam Bank, the PSU, smaller PSU has been underperforming ever since the election outcome. They have been slowly drifting lower. ये बड़ा कैंडल जो इलेक्शन आउटकम का था वहां से it has never even tried to go above the highs. तो वहां से slow and steady it has been correcting. Almost 105 के आसपास आ गया है. अगर हाई टाइम फ्रेम की बात करें तो 101 and 100. These are very good support for Canara Bank. तो I think ये support से आप hold कर सकते हैं. But trend थोड़ा सा negative है in the smaller PSUs. So, sir, Sun Pharma was given as a BTST yesterday. Okay. Can we have an update on the same? Okay, so BTST, I think we gave yesterday. So I think you keep ये भी again pharma sector से है. So it has been relatively outperforming the other indexes. तो नीचे में 1680 का very strong support 80-85 का. तो 1680 के stop loss से you should continue to hold. ऊपर में 1750 के targets के लिए. Sir, update on our फिलहाल आपकी 73 है. तो अगर ये 55 से 60 के बीच में आता है तो we try to play the move. I think क्योंकि strike shift करके there is no point. The other option may expire. इसका OTM है तो it may expire and we might get a premium DK का thing. So 22,600 पे फोकस करेंगे. We try to
keep the buying range of say 55 से 62 के बीच में, and we'll look for 85 to 90 का target and 10 to 12 points का stop रहेगा. So that this should be the final trade. I don't think we need to shift the strike. तो 22 या 600 का पुट पे ही देखेंगे हम. 58 से 64 65 के बाइंग रेंज, 10 points 12 points का stop and 1:3 2.5 का रेशियो के हिसाब से will play the trade. So Sun Pharma, I think I have updated 1680 का stop and it's a very strong support. तो उसके support से look for 1750 1760. I think you're speaking on mute. Apologies. I was just repeating the trade. So we have shared the trade on a screen. 20 to 600 put. Yes. Buying range would be 55 to 60. Stop loss 45 to 50, and the target would be 90. Yes. I guess, sir, we can have one stop loss, right? Let's keep stop loss at 45 or at 50. Yeah, only 12 points. Don't. I think if it corrects beyond 10 to 12 points, it will not work only. So Okay. Got it, sir. There's no point keeping deep stop losses for that. Because it is holding 22,500, 501 का low किया है, so that is the only reason I didn't wanted to shift the strike. Because 525 पे 500 का 22,500 का put, 550 का put, almost half the premium would be time value, so that would hurt us more. नीचे में अभी फिलहाल 66 होके आया है, तो I think the option is playing cat and mouse with us. Every time we are shifting our levels higher, it is making low 1-2 rupees near to our buying range and then again moving higher. So we'll continue to stick with the trade because there's no point buying aggressively and then eventually not making money, because the range is only 30 points within the option. So if you buy at a higher price and then keep a deep stop loss, your stop loss becomes almost 30-40 points, which becomes very difficult to manage, which is why we are considering to buy in a dip so that the margin of safety comes and we try to play with a limited risk and good reward. So the index has made a low at 22,501 and वहाँ से थोड़ा सा एक bounce back wherein 30-40 points का bounce back आया है, तो currently trading 22,522 or 518. So I think we'll wait for the dip. I don't think we should be aggressive and buying at CNP because your stop loss becomes very big. Almost 30-40 points का stop हो सकता है. अगर current market price पे लेते हैं तो we'll have to keep a stop of say 52 is 30 points. So we'll see. अगर अपने buying range में आता है तो well and good. Otherwise, we'll try to find some stock. If we have some BTST, we'll try to get some BTST. So, Sun Pharma, I think I've answered. If there is any other stock. Suzlon? I think Suzlon has been doing well. I guess our trade made a low of 64. People have already entered at 65, 64. Okay, good. I think they would be making 12 rupees. So good. You have to maintain a stop of 12 rupees only from the buying price. No, there's no point having a deeper stop loss. Deepak ji made 10K twice. Congratulations. Perfect. Good. So now our trade has been initiated. I think it made a low at 60. Wapas 65, 66, 67, 70. So I think continue to churn your position. I think keep a stop of 12 rupees from the buying price and look for 15-20 point swing on the higher side.
Guys, keep on churning and booking partial profits. I guess after waiting so much, finally we got a chance to book some profit. Finally, at least 2 or 3 times we have Honest, changed. मुझे तो लगा कि इस बार भी वो हमारी बाइंग रेंज से 2 रुपए टच करके निकल जाएगा. Yeah, so it's kind of strange. No worries. Okay. I think Suzlon, I was answering. Suzlon has been relatively outperforming the market. तो ऊपर में 70 का हाई करके 71 का हाई करके वापस 66 का थोड़ा सा पुल बैक आया है. तो आई थिंक जब तक हायर टाइम फ्रेम में 50 इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर सुजलॉन. तो 50 जब तक ब्रेक नहीं करता है विल कंटिन्यू टू बी लॉन्ग. ऊपर में 75 85 का टारगेट स्लो एंड स्टेडी आ सकता है. So GMR Infra. I think GMR 88 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो 88 के स्टॉप से होल्ड कीजिए. ऊपर में वापस 100 आ सकता है. So our option is again back to 70, 68, 70 का प्राइस है. So I think people would have definitely got the dip 72. I think Railtel 460 का प्राइस है. I think नीचे में 430 is the base for Railtel. 430 is a good accumulation zone also for people who want to enter fresh. तो keep a stop of 420. अगर 430 आता है तो keep a stop 410 and continue to be long in Railtel. So what was the low did our option trade make? Our option made 47 का low. 47, okay. Congratulations on a profit. I guess our stop loss was 45 to 50. कुछ लोगों को stop loss hit हुआ होगा जिन्होंने 50 का रखा होगा. That is something. And जिन लोगों ने 45 का रखा होगा उनका ट्रेड अभी भी चल रहा होगा. Yes, Shani ji, you can check that stop loss was 45 to 50. जिन लोगों ने low पे रखा होगा. Sorry. The option is 82 now. Guys, जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं, please book a profit. गोविंद जी में 20 के कुछ लोगों को स्टॉप लॉस हिट हुआ है जिन्होंने 50 का रखा था, पर जिन लोगों ने 45 का रखा था एज पर द रिस्क एपेटाइट उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है. इट मेड अ हाई 1200 8000 20000 bought at 46.9 sold at 75. Perfect. 82 84. So I think it was a worth the wait. I think at least few people tried to got some profit out of it, so it's a good thing. I can see people writing that we agreed on one stop loss. Yes, we agreed after our discussion. We agreed on one stop loss, and that was like 12 points from the buying. Buying was 55 to 62. तो उस हिसाब से भी हमारा stop loss होता है 43. Even if we go from that angle, the stop loss was 43. On rock, bought at 52, sold at 75. Thank you. 88 plus 90, 92. 92. So Kapil ji made 2K. I hope people have made some profit at least. Yeah, at least some people would have made profit. Sanjeev ji made 1000. Vibhor ji booked in 14 points. Good. Sir, I guess we can take 2 more queries and then end the session. The first one would be, what will be the market scenario likely for tomorrow? Kal market kaisa rahega? What is your opinion? And the BTST. I think BTST is a bit difficult. I'll just check. But market will all depend on how the global markets fare. I think today's closing is near 24,000. 23,750 निफ्टी की बात करें तो इज वेरी क्रूशियल. तो आई थिंक जब तक वो होल्ड कर रहा है तो एक रेंज रहेगा 23,750 से 24,250 से 300 तक का. तो दिस रेंज यू हैव टू कीप एन आई ऑन. 2 गैप डाउन हुए तो जब तक ये गैप फिल नहीं होता तो थोड़ा सा सेंटिमेंटली एक नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि गैप डाउन आर यूजुअली जितना टाइम लेता है वो गैप फिल करने को, इट बिकम मोर नेगेटिव ऑन दैट पार्ट. But having said that, the Indian market has been outperforming the global peers. तो अगर थोड़ा सा भी एक cool off आता है in the global market, say US it ends today positive by say 1%, then I think we should
make what to say near term bottom near 23,650 700 odd, but volatility रहेगी definitely. We will see swings on both the sides, and we have to play accordingly. So stop loss and maintaining stop loss in trading position is very important. So that is what I would suggest. I think wait for the what to say, dust to settle and then try to buy. अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 2-3 years का, तो this gives a very good opportunity. There are many stocks जिसने almost 20-30% correction आया है, तो slow and steady you can buy into those stocks जो fundamentally sound है. I don't think after 2 years anyone would remember this dip. So this is a good opportunity for investors. Traders should थोड़ा सा dust settle होने देना चाहिए. 2-3 years का time horizon है, तो definitely they should try to buy at least some position into the stocks. हमने already at 80-85 पे बोला था कि to book profits, but that call made 105 as per अंकित यादव जी जिन्होंने chat में लिखा है. So that's great. अगर किसी ने hold किया है तो you can book profits now. Congratulations on a profit, 16 points, 4K, 7K. And moving on, the last trade, sir, BTST. BTST, I rather wait for. I don't think we have any BTST because price थोड़ा सा corrective move आया है, तो I think we don't want people to lose money. Capital protection is very important. हर दिन trade करना and buy sell करना is risky also, and as of now थोड़ा global भी 1-2% का move आ रहा है daily का, तो why try to burn your fingers in that? Why carry overnight risk? So better to play intraday. हमारा morning session में we usually share intraday, so you participate in that. So that would be a better what to say trade rather than buying today and अगर कल gap down हो गया तो you'll eventually lose. So Thank you, Nikunj sir. I guess that will be all for the day. We made a good profit. बड़ी मुश्किल से मुझे तो लगा था trade मिलेगा ही नहीं, but eventually we got the trade at the right entry. But this shows the tenacity and the patience that we require and not taking aggressive trades. True. And also sometimes everything doesn't go as planned, but still we need to wait it out. This is something which we all learned today. So that will be all. Thank you everyone for joining in. See you tomorrow in the morning session, guys. Please start joining the morning sessions क्योंकि वहाँ पे हम काफी सारी queries लेते हैं and everything revolves around stocks, and also ask more questions on Stockomo. We'll be happy to take all your queries. Thank you everyone for joining. Thank you Nikunj sir. I hope you're reading the chat. काफी बहुत प्यार आ रहा है वहाँ पे सबको. काफी पैसा बनाया है हमने. That will be all. Thank you everyone.